Hello student, today we will solve the question bank given by the board, and from the question bank we will just solve the creative questions only. We will only solve creative questions, right? देखिए क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, बट मोस्टली बोर्ड एग्जाम के अंदर MCQ for 1 mark, 2 mark and 3 mark मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही आएगा। और जो भी क्रिएटिव क्वेश्चंस है वो सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्रिएटिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। दैट इज फॉर द लास्ट 3 मार्क क्वेश्चन जो चैलेंजिंग होता है, लास्ट का जो 3 मार्क का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक में से पेज नंबर 64, पेज नंबर 64, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे, राइट। तो द फर्स्ट सम इज द गिवन कंडीशन इज 3 sin A प्लस 5 cos A इज इक्वल टू 5। ये हमको गिवन कंडीशन है, राइट, इज गिवन टू अस एंड हमको प्रूफ करने बोला है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करने बोला है उसमें? 5 sin A माइनस 3 cos A इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हमको प्रूफ करने बोला है, राइट। 5 sin A माइनस 3 cos A शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो देखिए किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वी टेक द हेल्प ऑफ गिवन 3 sin A plus 5 cos A is equal to 5. It is given to us, right? So what we will do? We will do squaring on both the sides. Squaring on both the sides. क्या होगा squaring करेंगे तो 3 sin A plus 5 cos A the whole square is equal to what? 5 square. Squaring करेंगे दोनों तरफ करेंगे। Here I will apply A plus B the whole square का formula. Which formula? A plus B the whole square का formula. फॉर्मूला क्या रहेगा? A स्क्वायर 3 sin A the whole square प्लस 2A 2 into 3 sin A into 5 cos A प्लस B स्क्वायर 5 cos A the whole square एंड राइट हैंड साइड पे 5 स्क्वायर इज 24, राइट। 3 sin A the whole square will become 9 sin square A. Square will go on both the sides. 2 3 are 6, 6 5 are 30 sin A into cos A, right? Plus, and this is 25 cos A. That equal to 25, right? What we will do? 30 sin A into cos A. 30 sin A into cos A को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे। 9 sin square A and 25 cos square A we will take on right hand side. So 25 minus 9 sin square A minus 25 cos square, right? So we got the value of 30 sin A into cos A. ये आप लोग बोलेंगे सर ये वैल्यू का क्या यूज है? Let's see the next part of the quiz. हमको ये प्रूफ करना है 5 sin A minus 3 cos A equal to plus minus. So what will be 5 sin A minus 3 cos A, इसका हम लोग स्क्वायर कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? स्क्वायर, राइट। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अगेन A माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, राइट, एंड प्लस B स्क्वायर 3 cos A द होल स्क्वायर। So 5 sin A the whole square will become 25 sin square A, and this will become what? 30, na? 2 5s are 10, 10 3s are 30 sin A into cos A, and this is 9 cos square A, 9 cos square A, right? 25 sin square A minus, see here 30 sin A into cos A। हमने देखा, हमने वैल्यू निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में। 30 sin A into cos A का वैल्यू क्या है? 25 minus 9 square A minus 25 cos square A. We will put here. In place of 30 sin A into cos A, what we will put? 25 minus 9 sin square A minus 25 cos square, right?
and plus this 9 cos square a, right? So what will become 25 sin square a minus 25 minus minus plus 9 sin square a, again minus minus plus 25 cos square a and plus 9 cos square a, right? Okay, 25 sin square a plus 9 square a will become 34 sin square a, right? And similarly 25 cos square a plus 9 cos square a will become 34 cos square a and minus 25. From both these we will take 34 common, sin square a plus cos square a minus 25. As we know, sin square a plus cos square a according to first trigonometric identity, 1 of that minus 25. 34 over the 34, 34 minus 25, 9. Right? That means what? 5 sin a minus 3 cos a the whole square किया, उसका वैल्यू क्या है? 9 है, right? That means 5 sin a minus 3 cos a the whole square is equal to how much? 9. And if we take square root in the last step, if we take square root, यहाँ से square हट जाएगा, and what will become? 5 sin a minus 3 cos a will be equal to plus minus, right? As we have taken square root, दो रूट हो गए, तो 9 का square root is 3. So 5 sin a minus 3 cos a is equal to plus minus 3. Clear? Now we will see the second one. So what is the second question? Second question is cos a plus cos square a is equal to 1. It is given, and we have to find the value of sin square a plus sin raised to 4a. It is very simple. This type of question last year challenging में पूछा है. From here, what we will do? Cos a equal to cos square a को वहाँ लेके जाएंगे हम तो 1 minus cos square a, right? What is 1 minus cos square a? Sin square. 1 minus cos square a is sin square. कैसे आता है ये मेरे पास? Trigonometric identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1, right? So sin square theta will be equal to cos square को वहाँ लेके जाएंगे तो 1 minus cos square theta, right? So in place of 1 minus cos square theta, we will write directly sin square theta. So 1 minus cos square a का वैल्यू sin square. That means cos a का वैल्यू क्या आ गया? Sin square a आ गया, okay? So again हम लोग given का हेल्प लेंगे. Cos a plus cos square a equal to 1. ये given है हम लोग को. Right? Cos a. Instead of this cos square, what I will write? Cos a the whole square. Right? And what is the value of cos a? What is the value of cos a from this equation? Cos a का value is sin square a. Again, cos a का value is sin square a the whole square is equal to 1. Sin square a plus sin raised to 4a. 2 2s are 4 is equal to 1. Sin square a plus sin raised to 4a का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा. Is it clear? Okay, student. Now we will see the third sum. Okay. For the third sum, see what it is given. Cosec a minus sin a is equal to p. Cosec a minus sin a is equal to p and sec a minus cos a equal to p. It is given. These two are given, right? And proof क्या करना है हमको?
p square q raised to 2/3 plus pq square raised to 2/3 this should be equal to 1, right? Okay, क्या करना है पता है हमको, ये कंडीशन गिवन है हमको, राइट? cosec a minus sin a is equal to p. So in place of cosec a मैंने इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई 1/sin a minus sin a is equal to p, right? Then do cross multiplication. 1 minus sin into sin square a upon sin a is equal to 1 minus sin square is cos square a. इसके पिछले सम में हमने देखा 1 minus sin square cos square a upon sin a is equal to p, right? Similarly, for the second given condition, sec a minus cos a equal to q. In place of sec a, again inverse formula 1 by cos a minus cos a upon 1 is equal to q. Do cross multiplication. 1 minus cos square a upon cos a equal to q. 1 minus cos square is sin square a upon cos a equal to q, right? इसको पॉज बना के रखना है क्योंकि हमको इसका वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट करना है, right? So what is the left hand side? p square q raised to 2/3 plus pq square raised to 2/3. Now I am substituting the value. मैं अभी वैल्यू पुट करने वाला. So in place of this p, what I will write? Cos square a by sin a the whole square. See p का वैल्यू is cos square a by sin square a and square इसलिए यहाँ पर square है, right? Second bracket. What is q? Sin square a by cos a, right? This bracket is raised to 2/3. Clear? Plus again the second bracket. What is p? Cos square a upon sin a, first bracket. And what is q? Q is sin square a upon cos a the whole square, and again the whole bracket raised to 2/3, right? Okay, square है, this square will go on both the side, so what it will become? Cos raised to 4a upon sin a multiply that. This is sin square a upon cos a entire raised to 2/3. Similarly, cos square a by sin a multiply that. This become 2 to the sin raised to 4a by cos square. This square will go on both the side and the entire bracket raised to 2/3. Clear? Now see, एक sin और एक sin कैंसिल हो जाएगा और एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा तो cos क्यूब बचेगा, right? cos क्यूब बचेगा. Similarly, cos square get cancel, right? Cos square get cancel and one sin get cancel, it will become sin cube. तो क्या बच गया हमारे पास? cos cube a raised to 2/3. See, cos cube a बचा raised to 2/3 प्लस सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? sin cube a raised to 2/3. Clear? Now these three and these three get cancelled. These three and these three get cancelled. तो फाइनली क्या बचना है? Cos square a plus sin square a. And what is cos square a plus sin square a? 1, which is nothing but our right hand side. Okay, now student, we will see the fourth one. So what is the fourth question? Tan 70 into tan 23 into tan 60 into tan 67 into tan 83. This should be equal to root 3. ये हमको प्रूफ करना है, right? So we will take left hand side first. So what is the left hand side? Tan 7 degree into tan 23 degree into tan 60 into tan 67 into tan 80, right? Okay. So we will take tan 7 degree as it is. tan 23 को भी as it is रखना है. Okay. From the table, tan 60 का वैल्यू क्या है? tan 60 का वैल्यू is square root of 3, right? Okay. Now tan 67 को I can write 90 minus 23. This 67 को I can write 90 minus 23. And similarly, this 83 को I can write 90 minus 7. Right? Clear? क्या किया मैंने? tan 7 ऐसे ही रखा है, tan 23 ऐसे रखा है. We know the value of tan 60, root 3 वैल्यू है उसका. And next 67 के बदले में tan 90 minus 23 लिखा है. Again this tan as it is 83 के बदले में 90 minus 7 लिखा है. Right? Now
9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, राइट। तो tan 7 डिग्री विल रिमेन एज इट इज, tan 23 विल आल्सो रिमेन एज इट इज, √3 भी ऐसा ही रहेगा, राइट। ओके, tan 90 minus 23, tan 90 minus 23, this is theta, right? So tan 90 minus theta is what? Cot theta. What according to formula? What I will write? Cot 23. What I will write? Cot 23. And similarly, this is also theta. So tan 90 minus theta is what again? Cot theta. So what I will write? Cot 70. Clear? This is the reason. Clear? Then we have one more formula. Tan theta into cot theta is equal to how much? 1. Tan theta into cot theta is equal to how much? 1. So see here, tan 7 into cot 7. tan 7 into cot 7 क्या होगा? 1. देखो यहाँ पर एंगल सेम है, 7 7. तो tan 7 into cot 7 क्या होगा? 1 होगा. Similarly, tan 23 into cot 23 भी क्या होगा? 1 होगा. And finally क्या बच रहा है हमारे पास? √3. 1 into √3 will be √3. And that equal to right hand side. So this is the formula. Tan 90 minus theta is equal to cot theta, and tan theta into cot theta is equal to what? 1. This is the formula. Okay. Now we will see the fifth question. So what is given in the fifth question? Sin theta plus cos theta is equal to √3, and what we have to do? Tan theta plus cot theta is equal to 1. Right? तो हम लोग क्या करेंगे? Given condition का ही यूज करेंगे. So first we will take the given one, squaring on both the sides, squaring on both the sides, right? Squaring करेंगे तो क्या होगा? Sin theta plus cos theta the whole square equal to √3 square, right? Now apply formula. This is a and this is b. A plus b the whole square का formula होगा a square plus 2ab plus b square, right? And this is √3 square is 3. A square plus 2ab plus b square. What is sin square theta plus cos square theta? First trigonometric identity से वैल्यू क्या होगा? 1 plus 2 sin theta into cos theta is equal to 3. Right? 2 sin theta into cos theta. 1 we will take on right hand side. 3 minus 1. 2 sin theta into cos theta equal to 3 minus 1 is 2. Right? This 2 and this 2 get cancelled, right? So what is sin theta then? Cos को right hand side पे लेके आएंगे हम लोग 1 upon cos theta, right ना? यहाँ पर 2 2 get cancel हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा, right? So sin theta into cos theta is equal to 1, and sin को left hand side पे रखेंगे, cos को right hand side पे लेके जाएंगे, तो cos 1 upon cos theta. So what is the value of sin theta? 1 upon cos क्या होता है? Sec theta. This is the inverse formula, right? 1 upon cos theta is sec theta. So we got the value of sin theta. Sin theta का वैल्यू क्या है? Sec theta. Sin theta is equal to sec theta, right? Now what we will do? We will take left hand side. जो हमको प्रूफ करना है ना, उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा. tan theta plus cot theta, right? Now tan का स्पेशल फॉर्मूला है हमारे पास sin upon cos theta, and cot का भी स्पेशल फॉर्मूला है cos upon sin theta. We'll do cross multiplication. Sin into sin, sin square theta. Cos into cos, cos square theta upon cos theta into sin theta. What is sin square plus cos square according to first trigonometric identity? 1. So 1 upon cos theta into sin theta. Now separate 1 upon cos theta into 1 upon sin theta. Right? What is 1 upon cos theta? Sec theta into 1 upon sin theta. 1 upon cos क्या होता है? Sec होता है. Now what is the value of sec theta from equation number 1? Sec का वैल्यू क्या है? Sin theta. So in place of the sec theta, what I will write? Sin theta into 1 upon sin theta. This is from equation number 1. This sign and this sign get cancelled and we get what? Only 1. It is equal to what? RHS. It is equal to RHS. Okay, student.
Now we will see the sixth one. What is the given in sixth question? Tan theta minus sin square theta is equal to cos square theta. And what we have to do? Sin square theta is equal to 1 by 2. Right? ये हमको प्रूफ करना है. So we will take given first. Given लेंगे हम लोग. Tan theta minus sin square theta is equal to cos square theta. What we will do? हम लोग ये sin square को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. Cos square theta plus sin square theta, right? Sin square उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. And according to first trigonometric identity, what is sin square plus cos square? 1. Sin square plus cos square is 1, right? Okay. Now tan theta का वैल्यू 1 आया है. हम according from the table, जो हम लोगों ने टेबल याद किए थे, tan में कौन से एंगल में वैल्यू 1 आता है? tan 45 डिग्री. tan 45 है ना. tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है. तो इन प्लेस ऑफ दिस 1, व्हाट आई एम राइटिंग? tan 45. दैट मींस व्हाट? थीटा जो हमारा एंगल है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा. कितना हो जाएगा वो हमारा एंगल? 45 डिग्री हो जाएगा. क्लियर? फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल इज थीटा. थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 45 डिग्री. अच्छा, व्हाट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड जो हमको प्रूफ करना है? इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? sin स्क्वायर थीटा. sin स्क्वायर ऑफ आई कैन राइट एज sin थीटा द होल स्क्वायर, राइट? अच्छा, sin थीटा, व्हाट इज थीटा का वैल्यू? 45. sin 45 डिग्री द होल स्क्वायर है ना. थीटा का वैल्यू इज 45. sin 45 द होल स्क्वायर. व्हाट इज sin 45 का वैल्यू? 1 by root 2 द होल स्क्वायर. एंड 1 by root 2 विल बिकम 1 by 2 है ना. 1 by root 2 का स्क्वायर कितना होगा? 1 by 2 इज इक्वल टू हाउ मच? क्लियर? Okay, student, we will see the last question. So what is the left hand side? 1 minus cos square a into sec square b plus tan square b into 1 minus sin square, right? Okay. As we studied the formula, 1 minus cos square a क्या होता है? sin square होता है into sec square b as it is tan square b, and similarly 1 minus sin square a क्या होगा? cos square होगा, right? Okay. sec square b की वैल्यू next step sin square a is as it is in place of sec square b from the second trigonometric identity 1 plus tan square b, right? And this remain as it is tan square b into cos square, right? See, this sin square a will get multiplied by 1 also and will get multiplied by tan square b also. So sin square a into 1 sin square a plus sin square a into tan square b sin square a into